the online course that is professional practice in civil engineering. So now in this course, there are 6 modules. The first module is about building, planning and drawing. And second module is building planning using AutoCAD. Now, so we have started this second module, that is building planning using AutoCAD. And one by one now we are learning how we can use the AutoCAD for creating fantastic building drawing. After the completion of all these 6 modules, our target is to complete one portfolio. So that portfolio is containing 16 drawings. So whenever you are completing this internship program for professional practice in civil engineering, you will targeting your completion of 16 drawings in AutoCAD. So in the first session, we have seen that what is our target of this achieving this internship program, that is professional practice in civil engineering. And then we have started how we can use the AutoCAD software. So we have seen that how to start the AutoCAD software, then how to start the AutoCAD file. So there are different startup methods are there. So that we have seen. Then how we can use keyboard and mouse in AutoCAD, that already we have also seen. Then we have seen what are the uses of function key. So earlier I have already given you the number of questions. So you have to start writing the answer in your notebook. So today also now there are going to be 2 different questions. You have to take the screenshot of that. So once I am sharing my screen, so first screenshot you have to take, and after few time again you have to take second screenshot, and based on that there will be 2 questions you have to answer in your notebook, and that will be the learning for today's session. So I will just start with my screen share. So once my screen is visible to all of you, you can type yes in the chat box, Y for chat box. So I will understand that my screen sharing is visible to you, and I will start the session. So I am just sharing. So all of you now are knowing that my screen is visible to all of you. So you can just type yes, and now we will proceed with this. So already we have seen that what are the function buttons. Now the important topic today now we are learning is significance of mouse cursor in AutoCAD. AutoCAD ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर हम लोग AutoCAD का जो वर्क स्पेस का विंडो है ब्लैक वाला, वहां पर आपका जो माउस का कर्सर है वो कैसे दिखाई देगा, उस पे से हम लोग पता कर सकते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन द AutoCAD. So while using the AutoCAD, you can observe the shape of your cursor of the mouse. So that mouse cursor indicates that what will be the next step while using the AutoCAD. So there are 2 ways. First is you can use dynamic input on or off. So for that there is one function button. So I want to know that what is that function button. So you have to type in the chat box for dynamic इनपुट ऑन ऑफ. डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा फंक्शन बटन है. सो दैट यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द फंक्शन बटन फॉर डायनामिक इनपुट ऑन ऑफ. So correct answer is given by Avinash and Sakshi and few of others that we can use function button F12. So by using function button F12, we can make dynamic input on off. So there are 2 ways. One is you can observe that dynamic input cursor, and also that you have to observe what is the mouse cursor. So I requesting all of you to take the screenshot of this table. So all of you have to take the screenshot of this table, where from you have to now write the answer of today's question. So just take the screenshot and then type completed, C for completed in the chat box, so that I will came to know that you have taken the screenshot and now I have to proceed. So take the screenshot of this
and then type C in the chat box. So after taking the screenshot, you have to type C in the chat box, so that now I will proceed with this. So here in your assignment, you have to write down this complete table. आपको ये पूरा टेबल जो है वो ड्रॉ करना है और जैसे के वैसे लिखना है. And also you have to practice this in the AutoCAD. What is the significance of all this? So one by one now you will see that about this how we can use all this. So AutoCAD में जो आपको कर्सर दिखाई देने वाला है वो कर्सर 4 टाइप का रहने वाला है. So normally now at present my cursor is arrow. So this arrow cursor is always there. So ये तो आपको वैसे ही पता है. This is called as normal cursor window. Then another type of cursor which is always there, which is default cursor in the AutoCAD drawing, that is also called as normal cursor in AutoCAD drawing. So this is default cursor. So it indicates the plus sign and box cursor. So you can see that here there is a plus type line and then there is a square box. So this is the combination of plus sign and the box. So this is normal cursor in the AutoCAD. Now we will also see this in the AutoCAD software. And then once you are starting AutoCAD command, जब हम लोग AutoCAD की command इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, when we are starting using AutoCAD commands, so this cursor changes. Either it may become plus or either it may become box. So you have to again understand this significance of this plus cursor and box cursor. So this way in AutoCAD, there is a arrow cursor, there is a normal cursor, that is plus and box. There is a single plus cursor. So only plus cursor sign will appear and then there may be a box. So what indicates? So in this next third column, the meaning is given and that is important here. Whenever you are finding this arrow cursor means you can start new command or you can change the command by using arrow cursor. अलग अलग AutoCAD की कमांड को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग arrow cursor का यूज करेंगे. But whenever you are working in your working space in AutoCAD, so AutoCAD drawing में हम लोग हमारा जो normal cursor है, so that will be like this plus and box. And this cursor changes as you are using the command. When we are using different commands, so either your cursor will get turned to this plus sign or either it will be transferred to the box. So what is the meaning of that? So that you have to remember now. So this plus cursor, it indicates click a point cursor. This plus cursor indicates click a point cursor. इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी आपको ऐसे प्लस कर्सर दिखेगा, इसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई तो भी पॉइंट क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप. फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू क्लिक सिंगल पॉइंट. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट. यानी आपकी जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है कमांड में वो है आपको कोई तो भी पॉइंट क्लिक करना है. दैट यू हैव टू रिमाइंड नाउ इन योर माइंड. जब भी आपको ऐसा कर्सर दिखता है इसका मतलब है कि आपको अभी कोई तो भी पॉइंट क्लिक करना है. एंड देन व्हेन देयर इज ए बॉक्स, तो इट इंडिकेट्स सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर्सर. तो जब भी आपको स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा, इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहने वाली है कि आपको कोई तो भी ड्राइंग में ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो इन दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द माउस कर्सर. सो नाउ आई विल stop this sharing and then I will share my AutoCAD screen so that you will understand how this can be done in the AutoCAD. So now here my desktop is visible to all of you. I will right click on the desktop icon. Remember always you have to start the AutoCAD software by right clicking on the AutoCAD icon and then click on the open button. So this will start AutoCAD in your software. So as you already know that the startup value we have placed as 1. So once we have set up the startup value, so this startup dialog box will appear. Here instead of taking empirical, you have to choose metric. So I have to use metric unit and click on OK button. So my AutoCAD software and file will load. It will also take time. You have to wait. Once the AutoCAD software gets started, now here you have to note down that. So on the cursor now there is a arrow cursor. So this is normal cursor in the AutoCAD. You can see arrow cursor. Now I have clicked in this workspace. So in the workspace I have clicked. So this is normal cursor, which you can see that it is a plus and a box. So this is normal cursor, you have to remember.
नाउ व्हेन आई टेक टू द टॉप, यहाँ पे अब ये जो टॉप में जो आपको कमांड्स के आइकॉन दिख रहे हैं, जब यहाँ ले जाता हूँ मैं, so now it becomes again arrow cursor. So this is a arrow cursor where you can place it. Now I have placed it on the move command. Then I can place it on the copy, or I can place it in the stretch, or I can open this arrow also. So this I can open here, or I can place this here, and I can open modify commands, or I can open layer commands, or I can open arrow commands. So all this is happening because now I am using select arrow cursor. So this arrow cursor is used to start the command, or you can here click on the command line also. Now this become I. You can just observe that whenever I bring my arrow cursor on the command line, so it become I, means typing cursor. So this is another typing cursor. So in your table, you have to indicate that how this typing cursor is there. So another type of cursor in the AutoCAD is typing cursor. This typing cursor is like as an eye, vertical eye. So you have to click on the command line. So it will automatically blink one line and you can type in the command line. So this, how this can be used, so that we will now learn. So here now this cursor is now normal cursor. तो नॉर्मल कर्सर का मीनिंग होता है कि अभी यहाँ पर AutoCAD में कोई कमांड आपकी शुरू नहीं है. So everything is normal. So you are not using any command. So that you have to understand from this. So no action is needed to take because their cursor is normal. Now what I will do, I will start any command. You will see later on step by step. But now I will start line command. So I have clicked on line command. So now you can see that this plus cursor appears. And there is written instruction was there. That instruction is specify a first point, then there is a value x, and then there is a value y. So you can type the x and y coordinate, or you can type the specify first point. So at present, this is a dynamic input option. So I know that dynamic input option can be turned on and off by using F12 function button. So what I will do, I will go to the F12 function button. So I will press F12 on my keyboard. Now you can see that the dynamic input goes off. अभी dynamic input यहाँ पर बंद हो गया. Now here I am only having that point cursor. So this plus sign indicates it is a pointing cursor. Means I have to click a point. So you have to remember that at the command line here, you can see here it is written that specify the first point. So you have to understand that now you have to take the action that you have to click a point. तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी आप लाइन कमांड या जो भी कमांड शुरू करते हैं, वहां पे आपका कर्सर प्लस साइन के जैसा आता है, इसका मतलब है कि आपको पॉइंट क्लिक करना है, और उसी प्रकार की कमांड लाइन आपको यहाँ पे दिखने वाली है, दैट इज स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट. सो नाउ आई हैव टू क्लिक वन पॉइंट, यानी आपने पॉइंट क्लिक कर दिया. अभी भी आपका जो कर्सर है वो उसी प्रकार से है. तो अगेन इसका मतलब यह है आपको कि आपको फिर से पॉइंट क्लिक करना पड़ेगा. सो दिस वे you can go on clicking the point and you can draw whatever the type of object you need to draw. And to complete the command, you have to press enter from the keyboard. So I have pressed enter. So in this way, you have to remember that whenever we are using drawing commands, so always the cursor become plus sign. तो अभी यहाँ पर plus sign के cursor आ चुका है. मैंने एक पॉइंट क्लिक किया, अभी भी कर्सर पॉइंट प्लस वाला ही है, मैंने फिर से क्लिक किया एंड माय कमांड वाज कंप्लीटेड एंड अगेन माय कर्सर इज अगेन नॉर्मल कर्सर. सो दिस इज द सिंपल इंस्ट्रक्शन. नाउ यू कैन अगेन सी दैट नाउ अनदर command also I will use. I will draw one of the rectangle here. So all these commands you are learning step by step, so don't worry about this. Now once this was done, now what I will do, I will use any of the command from the modify menu. तो मॉडिफाई मेन्यू की मैं अभी कमांड यूज करने वाला हूं. सो व्हेन आई स्टार्ट, सपोज आई एम यूजिंग मूव कमांड. सो वंस आई हैव यूज्ड द मूव कमांड, सो यू कैन ऑब्जर्व नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ माय कर्सर. सो यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स. अभी आपको जो मेरा कर्सर है AutoCAD में वो किस टाइप का दिखाई दे रहा है. सो यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स. यस. So Sakshi has given the correct answer. So now my cursor was turned as box. So box जब होगा तो क्या करना है हमको, ये हमको ध्यान में रखना है.
So whenever there is a box, so box indicates select object command. So you have to note down this. Box indicate select object command. So you can observe also. आप यहाँ पर कमांड लाइन पे यदि देखेंगे तो यहाँ पर मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा लिख के आ गया है. सिलेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ गया, इसका मतलब यह है कि अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, तो मुझे कोई तो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा. सो जो कर्सर है बॉक्स यदि दिखता है, इसका मतलब मुझे नेक्स्ट स्टेप में अभी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ये मुझे पता होना चाहिए. दैट यू हैव टू रिमेंबर whenever there is a box cursor means next step is you have to select any of the object. तो जब भी आपको बॉक्स कर्सर दिखाई देगा, इसका मतलब है आपको नेक्स्ट स्टेप में कोई तो भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है. सो दैट वे यू हैव टू रिमेंबर दिस सिग्निफिकेंस. तो अभी मेरा बॉक्स आ गया है, तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट टू दिस लाइन, or I can also select to this circle, or I can also select to the rectangle. So I have a choice that which object I have to select. So अभी मैं यहाँ पर rectangle को select करता हूँ. So now rectangle become dotted. So this is the important because I have used the move command जहाँ पर मेरा cursor box type आ गया था. And now again you can see, you have to remember whenever you are selecting any object means you are doing select object command. So always you have to press enter from the keyboard. अभी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में आपको हर बार एंटर बटन दबाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है. सो whenever we use select object command in the AutoCAD screen, so automatically you have to, next step is you have to press enter. So अभी मैं AutoCAD का एंटर प्रेस बटन करूंगा कीबोर्ड से. So I will press enter button from the keyboard. Now cursor was now changed. You can see here. Now this cursor was changed and it is again pointing cursor. It is plus sign. Plus sign means pointing cursor. इसका मतलब है कि आपको कोई तो भी पॉइंट क्लिक करना है. So now I will click this point. And now again to complete the command I will press enter. So you can see that my rectangle was then moved or then gone. So something happened in the AutoCAD and वो मेरा जो rectangle है वो इधर चले गया. So in this way you have to remember that whenever you start, suppose I will just start this command, copy command. Now this again is box cursor. So I can select this rectangle. Once I have selected rectangle, then I have to press the enter button from the keyboard, because after every selection to continue the command, you have to press enter button. So once I have enter button, now cursor was changed to pointing cursor. Now I will click this point. So I have hold the rectangle at the corner point. And now I will place it here. So now, and then I have to press enter to complete the command. तो मैंने कॉपी कमांड शुरू किया, यहाँ से उसको होल्ड किया और यहाँ पे रखा. So that we will see later on how these commands can be work, and but you have to see the difference that the cursor is changing to the pointing cursor or to the box cursor. So that point you have to remember now, and with this you will came to know that what will be the next step. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका अभी नॉर्मल कर्सर है, इसका मतलब कोई कमांड शुरू नहीं है. यदि ये कर्सर पॉइंटिंग कर्सर हो जाता है मींस प्लस टाइप का आ जाता है, इसका मतलब है आपको कोई तो पॉइंट क्लिक करना है, ये आपकी नेक्स्ट स्टेप रहेगी. या इसके अलावा कभी कभी आपका जो कर्सर है वो आपका बॉक्स कर्सर बन जाएगा. तो बॉक्स कर्सर मतलब ये है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद में एंटर प्रेस करना है. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. So in this way you have to understand that what is the significance of this cursor. And the next step that already we have seen is, जब भी हम लोग कमांड लाइन के ऊपर हमारा कर्सर लाते हैं तो वो आई शेप में बदल जाता है और आप यहाँ पर कमांड लाइन पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं. So you can type any value or any command name. So that also we will see later on. So in this way in the AutoCAD software, so now I want answer from your side. सो AutoCAD सॉफ्टवेयर में कितने टाइप के कर्सर आपको दिखाई देंगे? सो यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. इन द AutoCAD सॉफ्टवेयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्सर अपीयर? सो यू हैव टू टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. सो just already I have shared you the table. So in the table whatever that I have indicated, so is it that correct answer? This is not the correct answer. You have to remember this. But this is not this much only. There is another cursor that already now I have explained you. So correct answer is not 4.
ये तो मैंने आपको टेबल में 4 बताया। यस, करेक्ट आंसर इज 5, क्योंकि यहाँ पर एक आपको टेबल ऐड करने का रह गया है, जो जिसका आंसर क्या रहेगा। सो दैट कर्सर विल बी आई शेप कर्सर, दैट कर्सर नेम इज टाइपिंग कर्सर। सो आई शेप का वर्टिकल लाइन आपको दिखाई देगी, उसको हम लोग, उसका जो मीनिंग रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइपिंग कर्सर। सो दैट इज द डिफरेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द कर्सर। माउस का कर्सर अलग अलग जगह पे चेंज होता है। तो नॉर्मली एरो शेप में रहता है, सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग कमांड को। फिर ये प्लस साइन और बॉक्स दोनों दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कोई कमांड शुरू नहीं है हमारी। नाउ वी कैन स्टार्ट द कमांड। एरो है, इसका मतलब है पॉइंटिंग कमांड है, आपको कोई तो भी पॉइंट क्लिक करना है। और बॉक्स है, इसका मतलब है आपको कोई तो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर द ऑब्जेक्ट सिलेक्शन यू हैव टू प्रेस एंटर बटन फ्रॉम द कीबोर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको एंटर बटन प्रेस करना होता है। और उसके बाद में आता है आई आई कर्सर, मीन्स टाइपिंग कर्सर। इट इज कॉल्ड एज टाइपिंग कर्सर। सो यू वेन एवर यू क्लिक ऑन द कमांड लाइन, so I cursor will appear and you can type anything on the command line. So in this way, this part is now completed. So you have to type N in the chat box so that we will move to the today's next topic. So you type N in the chat box. So then we will move to the next topic, or otherwise we can also conclude our session. Yes. So we have to proceed for the next. So we will go for that, and now we will have the next table here. So you can now just see that this is one of the today's now topic, next topic, that is select command. So you have to note down this. So again I have to explain you that what is that select command. So again all of you have to take the screenshot and type C in the chat box, those who have completed. So everybody has to take the screenshot of this, because there is another question coming from this table. So you have to take the screenshot and type C in the chat box, so that I will came to know that you have taken the screenshot and now you are ready to listen the next topic in this. So here now we have to understand the select command. So whatever now here given in the table, now you have to note down this in your, so there is all this significance that now we will going to understand in the software. So I will close this screen now. So I hope that everybody has taken the screenshot, and now then we will proceed for this. So again you can observe my AutoCAD window. So here now we will going to start understand what is select command. So again now you have to remember that AutoCAD is a clever software. So whenever there is any command at present, now in the AutoCAD there is a normal cursor, so plus and box sign is appearing. So means that AutoCAD indicates that this is a normal cursor in the AutoCAD. But अभी मैं यदि आपको पूछूंगा कि अभी कौन सी कमांड शुरू है, so what will be your answer? In the chat box you have to answer अभी AutoCAD में कौन सी कमांड शुरू है, which command is now running in the AutoCAD. You can just see that my cursor is normal cursor. So you have to type your answer in the chat box. Plus and box is the cursor shape. लेकिन अभी कोई कमांड शुरू है क्या AutoCAD में? कमांड शुरू है कि नहीं है? Yes or no? Is there any command going on in the AutoCAD? Yes or no? अभी मेरा नॉर्मल कर्सर है, इसका मतलब अभी कोई कमांड शुरू है क्या AutoCAD में? Yes. So everybody is saying that no, 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 no. But only one person is saying yes. So I am asking to Mohini Chauhan, which command is going on? Yes, you have said yes. तो अभी AutoCAD में कमांड कौन सी शुरू है अभी? So Mohini has said yes. कौन सी कमांड शुरू है? So that you have to remember that जब भी आपका नॉर्मल कर्सर होता है, मतलब कोई कमांड यहाँ पर शुरू नहीं है, इसका मतलब सिलेक्ट कमांड शुरू है. That you have to remember now. In the AutoCAD, whenever there is no any command you have started, तो जो कमांड शुरू रहती है वो रहती है सिलेक्ट कमांड. तो वही हमको अभी सीखना है, यानी AutoCAD में सिलेक्ट कमांड हमेशा शुरू रहती है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. मींस यू कैन आल्सो क्लिक ऑन दिस बॉक्स, और मैं अभी सिलेक्ट कर सकता हूं, इसका मतलब मेरी सिलेक्ट कमांड चालू थी, इसीलिए मैं सिलेक्ट कर सक रहा हूं.
So in this way, you have to remember that in AutoCAD, when there is a normal cursor, so select command is automatically running. So in the select command, there are 3 different modes are there. 3 अलग अलग मोड है हमारे. तो पहला कौन सा मोड है? दिस इज नॉर्मल मोड. नॉर्मल मोड का मतलब यह है कि आपके जो भी ऑब्जेक्ट होंगे यहां पर, तो इन द नॉर्मल मोड you can place your cursor on any object. So I have placed my cursor on the rectangle, or I have placed my cursor on the circle, or now here I have placed my circle cursor on the line, or I can also place on this line, and I can click on this. So once I have clicked, this line was get selected. I have placed this cursor on the rectangle and I have clicked that left click, so that was get selected. I have placed the cursor on the circle and I have clicked here, so my circle was get selected. Means you can remember that whenever there is no command, select command is always there. Whenever there is no command, select command is always there. Means normal cursor means select command is going on. So unlike other software, if you press anywhere, so select command is always there and it is start working. So you can just see that. Now this I want to cancel. So what I will do, I will press escape button from the keyboard. So all this selection was, so this you have to remember in the select command. Whenever normal cursor is there, you can click on the object, so that object gets selected, or you can press on any, I will place this cursor on this line and click here. So this was get selected, or here I will place and click. So that was get selected, or I can select this circle. So in that way, I can use this normal cursor to select the object. So that is the first thing you have to remember. Now I will cancel this. So I will press escape button from the keyboard. So escape button से मैंने अभी इसको cancel कर दिया. अब और मुझे ध्यान में रखना है. So see, हियर अभी आपने ऑटोकैड में यदि गलती से भी माउस का बटन दबा दिया, क्लिक कर दिया, तो देखो मैंने अभी गलती से दबा दिया और अभी मेरा माउस मूव करता हूं. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयर इज ए ब्लू कलर रेक्टेंगुलर विंडो. सो दिस ब्लू कलर रेक्टेंगुलर विंडो इज आल्सो ए सिलेक्ट कमांड, दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो ऑटोकैड में हम लोग खाली पीली क्लिक नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू रिमेंबर. यदि गलती से भी क्लिक कर दिया आपने और आपने माउस को नीचे खींच लिया, तो अपने आप से नीला विंडो आएगा. तो नीला विंडो का मतलब क्या है? सो दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज ए ब्लू विंडो हैविंग ए कंटिन्यूअस रेक्टेंगुलर शेप. सो you can now you can here take any shape, but you have to remember that this is also a select command. तो आप कमांड लाइन पर भी देख सकते हैं, नीचे नीचे लिखा वाला यहाँ पे स्पेसिफाई द अपोजिट कॉर्नर और फेंस W पॉलीगॉन C पॉलीगॉन और स्पेसिफाई द अपोजिट कॉर्नर. इसका मतलब है ये सिलेक्ट कमांड ऑटोमेटिकली शुरू हो चुकी है. सो हियर यू हैव टू रिमेंबर दैट हम लोग ऑटोकैड में खाली पीली क्लिक नहीं कर सकते. आपने कहीं भी क्लिक किया तो सिलेक्ट कमांड चालू हो जाए, और फिर आपने और भी क्लिक किया तो सिलेक्ट कमांड फिर से बंद भी हो जाए. तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? नाउ अगेन आई विल क्लिक हियर एंड नाउ आई विल क्लिक माउस ऑन दिस साइड. सो नाउ यू कैन see the changes. So what is happening here? Now this blue rectangular window is coming in and the dotted lines are there. So this is also a select command, but there is a difference that we will see later on. So whenever, now you have to remember that. So in the select command, first is this is normal cursor. You can click on the object, so that object gets selected. To cancel the object, you can press escape. But there is another two options are there. So you can click on left side and another on right side. तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में दो कॉर्नर पे क्लिक किया मैंने, तो ब्लू रेक्टेंगुलर निकलेगा, कंटिन्यूअस लाइन की बॉर्डर है उसकी. तो ये भी एक सिलेक्ट कमांड है, इसका भी मीनिंग हम लोग देखने वाले. सो दिस इज वन अनदर मेथड. और अदरवाइज you can click on the right corner and then left corner. So in this way, when I draw the rectangle, so this is also a select command and having dotted border but having a green rectangle. So this is also a one of the select command. So now you have to remember this, that whenever there is no command, select command is on. So when you click from left to right, so this is a blue rectangular. This is called as closing window select command. This is closing window select command. So that you have to remember now. You have to note down in your notebook. Blue rectangle means closing window select command. Blue rectangle means closing window select command.
और यदि मैं यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके लेफ्ट साइड में क्लिक करता हूं, सो दिस इज ग्रीन डॉटेड रेक्टेंगुलर विंडो, so this is crossing window command. So select crossing window command. So this is crossing window select command है ये. तो crossing window select command and closing window select command, ये select command के दो अलग अलग ऑप्शन है. इसीलिए यहां पर आपको, मैं जब राइट से लेफ्ट क्लिक करता हूं तो हरा रेक्टेंगल आता है, सो दिस इज क्रॉसिंग विंडो सिलेक्ट कमांड. और लेफ्ट से राइट क्लिक करता हूं तो नीला कलर का रेक्टेंगल आता है, सो दिस इज क्लोजिंग विंडो सिलेक्ट कमांड. सो सिलेक्ट कमांड के अंदर क्लोजिंग विंडो एंड क्रॉसिंग विंडो, ये दो अलग अलग ऑप्शन है. इसका काम कैसे चलता है, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो दिस ब्लू विंडो इज कॉल्ड एज क्लोजिंग विंडो. इसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट को आप ये नीले वाले रेक्टेंगल में क्लोज करेंगे, दैट ऑब्जेक्ट विल गेट सिलेक्टेड. सो बिकॉज आई हैव क्लोज दिस rectangle in the blue window, so this rectangle was get selected. You can see here, so I have clicked here and here, so this was selected. I will place escape to cancel. Now I will place for the circle, so I will click here and then I will click here. तो सर्कल को मैंने नीले रेक्टेंगल के अंदर लाया तो मेरा सर्कल सिलेक्ट हो गया. तो क्लोजिंग विंडो का मतलब यह है कि नीले विंडो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएंगे वो सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने वाले हैं. तो अभी मेरे नीले विंडो के अंदर रेक्टेंगल और सर्कल दोनों भी है, तो दोनों भी सिलेक्ट हो जाएंगे. कैंसिल करना है तो मैं एस्केप दबा सकता हूं. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्लोजिंग विंडो इज ब्लू विंडो. हियर you have to enclose all the object you want to select in the blue window, so that object will get selected. Now if I will draw this rectangle up to still here, so you can see that only rectangle, circle and one line will that get selected. So because this line was enclosed by the rectangular, this also rectangle and circle was also closed, so this object was selected. क्योंकि ये नीले विंडो में सिर्फ तीन ही ऑब्जेक्ट मेरे अंदर बैठ गए थे, तो इसीलिए तीनों ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो गए. तो यू कैन प्रेस एस्केप टू कैंसिल दिस. नाउ इंस्टेड ऑफ दैट मैं उल्टा कर सकता हूं. अभी मैं इधर से इधर रेक्टेंगल निकाल सकता हूं. आई विल क्लिक राइट टू लेफ्ट. सो दिस राइट टू लेफ्ट मीन्स ग्रीन विंडो, दिस इज डॉटेड विंडो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉसिंग विंडो पॉलीगॉन और क्रॉसिंग विंडो सिलेक्ट कमांड. अब मैं यदि क्लिक करता हूं यहाँ पे तो मेरे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए. देखो आप, लेकिन एक लाइन छूट गई यहाँ पर, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो क्रॉसिंग विंडो का मतलब यह है कि जो भी लाइन ऑब्जेक्ट मेरा क्रॉस हो रहा है या उसके अंदर आ रहा है, वो दोनों सब सिलेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर. सो क्रॉसिंग विंडो इज मोर एडवांटेजियस टू सिलेक्ट मोर ऑब्जेक्ट, बिकॉज you can cross any object or you can include that any object and then you can select. So this is the feature. So whenever you want to select, so I can just draw this crossing window and I can select this rectangle, I can select this circle, or I can click this way. So this is dangerous because कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रॉस हो गया तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है. So that also you have to take care while drawing the crossing window. Any object inside the rectangle or crossing the rectangle will get selected. So that is not the case in case of blue rectangle. Whenever I am clicking left to right, so जो rectangle के अंदर आने वाले object है वही select होने वाले हैं. So this is the difference you have to remember. So therefore this blue rectangle is a closing window polygon and dotted green rectangle is a crossing window polygon. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने क्रॉस कर लिया मतलब वो अपने आप से सिलेक्ट हो जाएगा. तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट होगी मेरी अभी, क्योंकि मैंने क्रॉसिंग विंडो सिर्फ एक ही लाइन पे लगाया. सो दैट लाइन वाज ओनली गेट सिलेक्टेड. तो जो लाइन को क्रॉस करेंगे वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं आप बाय यूजिंग दिस ग्रीन डॉटेड पॉलीगॉन और एनी ऑब्जेक्ट. तो आप ऐसे भी कर सकते. तो आपको ज्यादा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा रेक्टेंगल ऐसे निकालना पड़ेगा, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे. लेकिन उनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ ब्लू रेक्टेंगल से कवर करो तो उतने ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर पाएंगे. सो दिस इज द डिफरेंस. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू प्रेस एंटर बटन. तो उसके सिवा आपकी कमांड आगे जाने वाली नहीं है. सो इन द लेटर स्टेजेस वी विल सी दैट हाउ दिस विल हैपन इन द वेरियस कमांड्स. सो आई होप दैट you have understood the three types of select commands are there. One is normal cursor, so you can click on any object and select the object. So this is one. Or you can press escape,
और अदरवाइज यू कैन ड्रॉ ए ब्लू रेक्टेंगल, सो दैट ऑल्सो ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर आने वाले हैं वही सिलेक्ट होंगे यहाँ पर। सो दिस इज क्लोजिंग विंडो पॉलीगॉन। और जो क्रॉस करके सिलेक्ट होने वाले हैं, तो अभी मैंने सारे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लिया, लेकिन 2-3 लाइन छूट गई उसमें की, तो वो क्रॉस वाली सिलेक्ट नहीं होंगी यहाँ पर। सो क्रॉसिंग विंडो से भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट there are 3 options are available. One is click on the object, one is closing window and another is crossing window. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके ऑटोकैड में कोई भी कमांड शुरू नहीं है, इसका मतलब सिलेक्ट कमांड हमेशा शुरू रहती है। सो यू कैन जस्ट क्लिक और सिलेक्ट, और यू कैन ड्रॉ ब्लू रेक्टेंगल, और यू कैन ड्रॉ। Now I have to just I want few answer from you. Suppose now I want to delete this object. तो मैं एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करूंगा और अभी डिलीट करने के लिए कमांड कीबोर्ड पर से डिलीट के बटन दबाऊंगा, तो मेरा ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। सो इन दैट वे यू कैन डिलीट द ऑब्जेक्ट। बट नाउ सपोज आई हैव ड्रॉन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग विंडो, तो बिकॉज आई हैव क्रॉस ऑल द लाइन्स, तो सारे ऑब्जेक्ट मेरे सिलेक्ट हो गए। अब इसमें से मुझे सिर्फ सर्कल को निकालना है, सर्कल को मुझे सिलेक्ट नहीं करना था, गलती से मेरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। सो हाउ दैट कैन बी डन, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसको कैसे करेंगे, अभी ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए मेरे, लेकिन मुझे सर्कल को सिलेक्ट नहीं करना था। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर, तो मुझे अभी कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और ये सर्कल पे क्लिक करना है। तो देखो मेरा सर्कल निकल गया अभी सिलेक्शन में से। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि यदि कोई सिलेक्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट, गलती से सिलेक्ट हो जाता है और उसको मुझे यदि कैंसिल करना है, तो मुझे कीबोर्ड पर से शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्शन में से निकल जाएगा, जैसा कि ये लाइन को मैंने भी निकाल दिया सिलेक्शन में से। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो यू हैव टू यूज शिफ्ट बटन टू ऐड और रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो काफी सारे ऑब्जेक्ट यदि सिलेक्ट हो गए गलती से, तो उसमें का एक आधा ऑब्जेक्ट अपने को निकाल रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट बटन दबा के फिर से वो ऑब्जेक्ट को क्लिक करना पड़ेगा, तो वो ऑब्जेक्ट वहां से सिलेक्शन में से निकल जाएगा। सो आई कैन डू विद दिस लाइन ऑल्सो। अभी मैं ये शिफ्ट बटन दबा के ये लाइन को भी निकाल देता हूँ, तो मेरी लाइन अभी ये यहाँ से निकल गई। ये लाइन को भी निकालना है तो इसको मैं क्लिक करूंगा, लेकिन शिफ्ट बटन दबा के रखा है मैंने। सो लाइक वे यू कैन रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेनी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो इन दिस वे I hope that you have understood the select option. So in the chat box you have to answer select command के अंदर हमने कितने ऑप्शन देखे अभी यहाँ पर, 1 2 3 or 4। In the select command how many options we have learned today? Wrong. Answer is not wrong. Answer is wrong. ऑप्शंस कितने सीखे आपने, ये मैं पूछ रहा हूँ, मैं कमांड्स के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। आज सिलेक्ट कमांड में कितने ऑप्शन सीखे हमने? यस। सो करेक्ट आंसर वाज गिवन बाय सोनल, दैट इज 4। हमने क्या क्या देखा है कि क्लिक करके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते, या ब्लू विंडो से क्लोजिंग विंडो से सिलेक्ट कर सकते, या क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट कर सकते, या शिफ्ट करके भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते या अनसिलेक्ट कर सकते। सो ऑल दिस आल्सो इज इंपॉर्टेंट। शिफ्ट बटन दबा के ऑब्जेक्ट को क्लिक करना या निकाल डालना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेक्ट कमांड। So today we will stop here. So there are 2 questions. All of you have to note down for your assignment in your notebook. So आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखना है. So write down that. So explain the significance of mouse cursor. Explain significance of mouse cursor in AutoCAD. Explain significance of mouse cursor in AutoCAD. तो आपको पहला टेबल मैंने दिया था, उसको देख के आपको पूरा आंसर आपके नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ माउस कर्सर इन AutoCAD, एंड द सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू राइट डाउन, एक्सप्लेन इन डिटेल how to use select command in AutoCAD. Explain in detail how to use select command in AutoCAD with various option. Select command in AutoCAD. Explain in detail how to use select command in AutoCAD
with various options. So I hope that you have written the 2 questions. 2 questions आपने लिखे हैं. So here we will stop for the today's session. So you can just type thank you, goodbye, see you, or nice, good, better, best. You can give your feedback, or you can ask any question in the chat box. And after few minutes, we will end the today's session. So I am just stopping my screen share. Tomorrow's next session is also very much important, where we will understand all the screen, whatever AutoCAD screen का जो भी सॉफ्टवेयर में आपको इंटरफेस दिखता है, वो इंटरफेस क्या होने वाला है, that also we will learn in the tomorrow's session. So I hope that you are clear with today's session. जो लोग भी अभी आज नए ज्वाइन हुए हैं या जिन्होंने इसके पहले का सेशन मिस किया है, उनको आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए. सो इन 2-3 डेज आपको एक व्हाट्सएप के ग्रुप की लिंक आने वाली है. हम लोग ऑटोकैड के इस प्रोफेशनल प्रैक्टिस इन सिविल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, बिकॉज देर आर फ्यू मोर स्टूडेंट्स, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी ये प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए उन सभी को मैसेजेस करने के लिए कब सेशन हमारा रहेगा नहीं रहेगा, या कुछ टाइमिंग में चेंज हो गया हमारे सेशन का, सो ऑल दैट इंस्ट्रक्शंस and assignment questions and notes, all the sharing that will be done through that WhatsApp group. So that link also will be shared with all of you. अगले Zoom मीटिंग में हम लोग वो लिंक शेयर करेंगे, आपको WhatsApp का ग्रुप ज्वाइन करना है, so that dedicated messages for this session that will be there. So वहां पर मैं अभी आज तक का जो सेशन हो गए उसका आपको मैं एक लिस्ट प्रेजेंट करूंगा वहां पर. So in the day 1 what we have learned, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6. Now you have to recall that कि कौन सा सेशन आपका मिस हो गया है, so that आप व्हाट्सएप पे मुझे बोल सकते हैं कि आपको कौन से दिन का वीडियो देखने आए. उसकी लिंक आपको पर्सनली आने वाली है, so that link you can watch and you can complete your remaining sessions. So thank you for joining today's session. I hope that you are enjoying this session. So you have to ask your friends to take the advantage of this free training program for professional practice in civil engineering. So you can also ask the join to any other students of any other college also. आप किसी भी ब्रांच के अदर स्टूडेंट्स को जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, या ITI में पढ़ रहे हैं, या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. जो लिंक आपके पास में वो लिंक उनको शेयर कर सकते हैं आप, and you can ask them to join. You can also ask to the third year, final year, or other students, or also you can ask any person who is willing to learn AutoCAD. तो कुछ सीनियर लोग भी है जो यहाँ पे AutoCAD सीखना चाहते हैं, वो लोग भी इस सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं. So I hope that once again you have enjoyed this. Thank you for joining this today's session. So we will stop for the tomorrow today, and then we will meet again in the tomorrow at 8:30. Thank you once again.